continuing with Charles Cooley, we move on to his another important concept of primary groups. So he considered the primary group as the, let's say, basic unit of society. Now, these groups are, let us say, small groups. These are intimate groups. The people have intimate kind of relationship with each other. And when we talk about intimate kind of relationship, it more or less these are face-to-face. And these relationships are permanent kind of relationships, durable kind of relationships. They continue, let us say, over time. And in this group, individuals are very cooperative. So we also call these as not only primary groups, but when people are members of that group, participate in that group, we call them as having primary relationships. So groups are primary because they are among the first group we experience in life. And सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी ग्रुप की एग्जांपल है वो फैमिली है, जिसमें कि ए चाइल्ड टेक्स बर्थ एंड देन grows up. So they are fundamental in forming the social nature and ideals of individuals. And in many cases, that individual is trained by this primary group as participating member of the society. So people have unity here, they belong to each other, they are, let's say, united kind of group. So there is a personal orientation, okay? Personal orientation, not that they are trying to use that group as a means to achieve something else. So it's not there is no goal orientation over here. So they don't use it as a goal-oriented kind of, let's say, group. और goal-oriented group अगर होगा तो फिर हम प्राइमरी ग्रुप के मुकाबले में दूसरा जो लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, जो कि परमानेंट नहीं होते, ड्यूरेबल नहीं होते, और उसमें इस किस्म की बातें नहीं हैं जो कि फैमिली ग्रुप में होती हैं. So there is fusion of individualities in the common whole and the resultant common purpose of the group. So that is तो सारा ग्रुप जो है उन सब का एक ही, लेट्स से, गोल है. तो लुकिंग ग्लास ऑफ जेस्चर्स, अब ये जो प्राइमरी ग्रुप है, इट एक्ट्स एज ए लुकिंग ग्लास ऑफ जेस्चर्स, जिसके बेसिस पर एक लेट्स से इंडिविजुअल की हु वाज बोर्न, अ चाइल्ड हु वाज बोर्न इन दैट ग्रुप, उसकी सेल्फ जो है वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और दैट is very helpful in the development of his individuality. So self emerges as an outcome of the interaction of the individual in the primary groups, where we have face-to-face kind of relationships, and there is organized kind of community. So that primary group is a bridge kind of thing, is a connection between that family and the large society, which is composed of various, let's say, institutions or various structures of the society. Because through the process of socialization, ये primary group जो है, it tries to inculcate the norms of the society in the individuals, the norms, the traditions, the morals, the values, and other cultural aspects in the individual. So this group provides a learning kind of situation whereby an individual learns how to play and an active participating member of the society. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आ रही है, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, इंटरेक्शन इज
necessary for the emergence of the self. तो हम ये कहते हैं कि अगर रिपीटेड इंटरेक्शन है और जिसमें इस एक्शन में कम्युनिकेशन है, जिसमें जेस्चर्स आ रही हैं, जिस पे लेट्स से रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें इवेलुएशन आ रही है, तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ और डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ फीलिंग और सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्शियसनेस. So primary group is important, an important agency of socialization, and because it's important, socialization, as I said, it's a learning process for how to play, let's say, different roles as participating member of the society. So in that context, primary group is a link between that group and the society or the structures of the society. और इस लिंक के बगैर हमारे फिर जो है अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको डेवलप करना या उनकी मेंटेनेंस जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है. तो फॉर प्राइमरी ग्रुप, फॉर Cooley, प्राइमरी ग्रुप्स आर स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ. ओके, तो यहाँ से वो बनते हैं जो भी उन्होंने बनना है. और प्राइमरी ग्रुप वो हैं जो कि जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, जिसमें उस बंदे की या इंडिविजुअल की जो रोल प्लेइंग के बारे में है वो ट्रू इवैल्यूएशन दी जा सकती है और उसको मॉडिफिकेशन के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है. सो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग आर द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द सोशल इंस्टीट्यूशंस. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में ये इन्हीं प्राइमरी ग्रुप से जो सोशलाइज होकर आएंगे उन्होंने रोल प्ले करने हैं. सो हाउ एडिक्वेटली दे प्ले देयर रोल, उसकी फाउंडेशन जो है वो वहाँ ले डाउन होती है. और इसी फिर कॉन्सेप्ट को जो है फिर मीड ने फर्दर डेवलप किया है इन हिज थ्योरी.